Nagin Best Digital Learning Channel. Today I am here with the second chapter of class 6th computer science, which is computer memory. So let us first of all look at the objectives. After completing this chapter, we will be able to understand computer memory and its unit, understand the types of computer memory, understand the layers and use of cache memory. So let's begin with computer memory. Memory plays a very important role in computer. It is the basic unit where data and instructions are stored temporarily. Means memory is the basic unit where data and instruction, all the files and the information is stored inside the computer. Memory usually consists of one or more chips on a motherboard, or you can say it consists of electronic components that store instructions waiting to be executed by the processor. Data needed by those instructions and result is processing the data. मीन्स मेमोरी जो है कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट इज़ द बेसिक यूनिट. ये बेसिक यूनिट है जहाँ पे सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में स्टोर होता है. मेमोरी यूजुअली एक या एक से ज़्यादा चिप से बनी होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड होती है. मदरबोर्ड क्या होता है? मेन बोर्ड और द मदर मीन्स द प्रिंसिपल बोर्ड जहाँ पे सारे प्रोसेसर सारी चिप्स अटैच होती है कंप्यूटर की. और मदरबोर्ड किसके अंदर होता है? सीपीयू में या फिर आपके लैपटॉप में. और मदरबोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं और वेट करते हैं कि कब वो डाटा एग्जीक्यूट होगा. Computer system is also equipped with some additional memory devices which are generally used to store programs, applications, data and information permanently. मीन्स कंप्यूटर सिस्टम में कुछ एडिशनल मेमोरीज भी होती है जिसके अंदर हम परमानेंटली प्रोग्राम को, किसी एप्लीकेशन को, डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. बिफोर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, लेट अस स्टडी अबाउट मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर. Memory units. Just like solids are measured in grams or kilograms and liquid are measured in liter or milliliter, similarly computer memory is measured in bits and bytes. मीन्स जैसे किसी सॉलिड मास को हम ग्राम या किलोग्राम में मेज़र करते हैं, लिक्विड को हम लीटर या मिलीलीटर में, उसी तरह से हम कंप्यूटर की मेमोरी को बिट्स या फिर बाइट्स में मेज़र करते हैं. A computer processes and stores data and instruction in the form of two digits, 0 and 1. कंप्यूटर में जो जितना भी डाटा और इन्फॉर्मेशन है 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर्ड होता है. These digits are called binary digits or bits. Means zeros and ones are called binary digit or bits. A bit is the smallest unit of information that a computer can process or store. A group of 4 bits together is a nibble. A group of 8 bits is called a byte, and a byte is the minimum space required to store a character. Means here we have given the building of a bytes. Means byte is the minimum space required to store a character. A character means a alphabet. If you have to store an alphabet in a computer, then its size is 1 byte, and this is the minimum size required to store any character in a computer. Means zeros and ones are called bits, and group bits is the smallest unit to be measured the size. Group of 4 bits together called nibbles, and group of 8 bits together called byte. Means 2 nibbles are 1 byte. Let us understand about this in detail through this table. 1 byte or capital B is equals to 1 character. Means 1 character can be stored through 1 byte. What is 1 kilobyte? 1 kilobyte means 1024 bytes. 1024 bytes together make 1 kilobyte. About 1000 characters can be stored in 1 KB or kilobyte. 1 megabyte 1 MB can store 1024 kilobytes or nearly 1 million, means 10 lakh characters. 1 gigabyte means 1024 megabyte.
about 1 billion characters. You might be familiar with gigabytes and megabyte. This is the amount of data. This is the unit in which the data you consume is available. मीन्स हम कहते हैं कि 1 GB का हमारा डाटा पैक है या 2 GB का डाटा पैक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 GB का डाटा पैक है जिसके अंदर 1024 मेगाबाइट्स होते हैं. नाउ 1 TB इज लार्जर यूनिट ऑफ gigabyte. 1 TB consists 1024 gigabyte, nearly 1 trillion characters. 1 petabyte means 1024 terabytes. 1 TB is a larger, very high space, and 1 petabyte is comparatively larger as compared to gigabyte and terabyte. 1024 terabytes together form 1 petabyte, nearly 1 quadrillion characters. 1 exabyte means 1024 petabyte or 1 quintillion characters. 1 zettabyte is 1024 exabyte or 1 sextillion characters. 1 yottabyte means 1024 zettabyte or 1 septillion characters. 1 brontobyte means 1024 yottabyte or 1 octillion characters. So far, we till date we have only discovered 1 brontobyte मच ऑफ स्पेस. मीन्स एक ब्रोंटोबाइट तक का ही स्पेस जो है अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं, बट हम इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं. 1 ब्रोंटोबाइट इतनी ज़्यादा स्पेस है, ये जर्नली स्पेस स्टेशंस या फिर बड़े बड़े ट्रांसमीटर्स में यूज़ होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना पड़ता है. बड़े बड़े सर्वर्स में या स्पेस स्टेशंस में, वहाँ पे 1 ब्रोंटोबाइट, 1 योटाबाइट या जेटाबाइट ये यूज़ होते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. Byte. 1 byte is equal to 1 character. A character can be number, letter और symbol. मीन्स एक करेक्टर के अंदर आपके ABCD भी आ सकते हैं, 1 2 3 भी आ सकते हैं, या फिर सिम्बल्स लाइक एंड, परसेंटेज. These symbols can also be 1 character. 1 byte consists of 8 bits or 8 binary digits. A bit is smallest unit of information a computer can process. Means bit is the smallest unit which a computer can easily process. Now next, petabyte or 1 PB. 1 petabyte is 1024 terabyte. This is approximately equal to a room full of books. Means your library which is full of books can be considered as a 1 petabyte of storage. 1 kilobyte can be considered as a 1024 byte. This is approximately equal to 1 page of a textbook. Here in this diagram you can easily understand the difference between different types of memories. 1 kilobyte is the paper which is on a table. 1 megabyte is equals to 1024 kilobyte, which is approximately equals to a book. 1 gigabyte is 1024 megabyte. This is approximately equals to a bunch of books. Means this can be considered as gigabyte. 1 terabyte is 1024 gigabyte or approximately equals to a entire bookshelf. This bookshelf can be considered as a terabyte, group of books gigabyte, a single book megabyte, a single paper of that book is kilobyte, and petabyte is your whole library, and byte is a single letter or character. Now let's move forward. Basically, the computer memory is divided into two types: primary memory and secondary memory. Primary memory is often known as working memory or the main memory of the computer system. Here a question arises: what is the main memory of computer system? And the answer is primary memory. Primary memory is of two types: volatile and non-volatile. When the computer power is turned off, volatile memory loses its contents. Means volatile memory is those type of memory which loses their content when the computer is turned off.
जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा, वोलेटाइल के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा वो फिनिश हो जाएगा या फ्लश हो जाएगा। बट नॉन वोलेटाइल या NVM वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा स्टोर रहता है, चाहे कंप्यूटर ऑन हो या फिर ऑफ हो। मीन्स उसके अंदर डाटा एक बार स्टोर हो गया तो वो तभी ख़त्म होता है जब हम नॉन वोलेटाइल में से डिलीट करते हैं। मीन्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन contrast does not loses its content when the computer is turned off. RAM and ROM are two major type of primary memory. They are made up of semiconductor material. Semiconductor क्या होता है, ये देखिए। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो होते हैं जो कि ना ही कंप्लीटली कंडक्टर होते हैं और ना ही कंप्लीटली इंसुलेटर होते हैं। अब कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने से इजीली फ्लो कर देते हैं, और इंसुलेटर क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो नहीं करते। जिस तरह आपका आयरन है या सारे मेटल्स है, आयरन स्टील कॉपर गोल्ड, ये सारे करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो कर सकते एक अपने से। और इसी के उल्टा वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सब इंसुलेटर्स है। मींस इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसलिए रबड़ के ग्लव्स पहनते इलेक्ट्रिशियंस जब वे बिजली का कोई काम करते हैं, ताकि, क्योंकि रबड़ क्या है, इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होता है जो कि ना कम्प्लीटली कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर होता है। मीन्स इसके अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ करंट पास कर जाता है, ना बहुत ज़्यादा करता कंडक्टर की जगह और ना इंसुलेटर की जगह तरह करता ही नहीं, थोड़ा अमाउंट। A computer cannot run without primary memory. Means primary memory is the must. Without primary memory, no computer can run. Now, let us update our knowledge. A byte means a character is the basic storage unit in a memory. When an application instructions and data are transferred to memory from storage device, the instructions and data exist as byte. Each byte resides temporarily in a location of a memory that has an address. मतलब क्या बताया गया इसमें, इसमें ये बताया गया है कि बाइट जो है बेसिक स्टोरेज यूनिट होती है मेमोरी की। जब एक एप्लीकेशन से इंस्ट्रक्शन या डाटा मेमोरी को ट्रांसफ़र करा जाता है, वो किसकी फॉर्म में अवेलेबल होता है, बाइट की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, 0s and 1, और आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा 0s और 1 के अंदर स्टोर होता है। तो हर एक बाइट का एक अपना एड्रेस होता है, ताकि कंप्यूटर उसको लोकेट कर सके कि कौन से एड्रेस पे कौन सा डाटा है। नाउ मेमोरी इज लाइक कारपेंटर्स वर्कशॉप। कि मेमोरी क्या है, कारपेंटर की वर्कशॉप की तरह है। द रॉ मटेरियल आर स्टोर्ड इन अनदर रूम लाइक हार्डवेयर, and carpenter or the CPU brings them into workshop, which is memory. Memory is the workshop where all the hardware or all the data is being put for processing. When the carpenter has completed the work, the finished piece is moved from the workshop, which is memory, to the storage. Next, let us understand RAM and ROM. First, RAM or Random Access Memory. What is the full form of RAM? Random Access Memory. RAM, also called the main memory, consists of memory chip that can be read from and written to by the processor and other device. Means RAM is the type of memory that can be read or written by processor or any other device. When you turn on computer, certain operating system files are loaded into RAM from a storage device such as hard disk. मीन्स जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वो कहाँ चला जाता है, वो हमारी रैम के अंदर चला जाता है। These files remain in RAM as long as the computer is on. मतलब हमें पता है रैम मेन मेमोरी है, तो इसका मतलब जैसे ही कंप्यूटर ऑन होएगा तब से लेकर जब तक कंप्यूटर बंद नहीं होता तब तक उसके अंदर मेमोरी रहेगी। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा उसके अंदर से सारी मेमोरी इरेज या फिर फ्लश आउट हो जाएगी। When additional application and data are requested, they are also loaded into RAM from storage device. Means
हमें कोई कमांड देनी है या हमें किसी फाइल की रिक्वायरमेंट है, तो वो रैम के अंदर तब तभी आएगी जब कंप्यूटर ऑन है, और रैम से रिमूव हो जाएगी तब जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। कंप्यूटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन से डाटा या फिर इंफॉर्मेशन रैम के अंदर लाई जाती है थ्रू फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। Processor or CPU inspects and executes a program or application instruction while the program or application is in RAM। मीन्स CPU क्या करता है, इस सारे डाटा को इंस्पेक्ट करता है। कब? तब जब वो रैम के अंदर आ जाते हैं। रैम के अंदर आने के बाद ही प्रोसेसर या फिर CPU अपना काम स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंटेंट ऑफ रैम में चेंज। मीन्स जब तक वो डाटा रैम में है, स्टोरेज डिस्क में या हार्ड डिस्क में नहीं गया, जब तक वो रैम के अंदर है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, तब तक हम उस डाटा को चेंज या फिर रीराइट कर सकते हैं। रैम कैन बी अकोमोडेटेड मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। मीन्स इन रैम के अंदर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली एक साथ रन कर सकते हैं। मीन्स दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स हम एक साथ रैम में रन कर सकते हैं, और वो डाटा मैनिपुलेट तब तक कर सकते हैं जब तक वो रैम के अंदर अवेलेबल है। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। मीन्स वोलेटाइल मेमोरी क्या है, हमने पहले पढ़ा है। वोलेटाइल मेमोरी आर दोज टाइप ऑफ मेमोरी विच गॉट इरेज्ड वंस द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। It loses its content as soon as the computer is turned off. For this reason, you must save the work you may need it in future. Saving is the process of copying its item from RAM to hard disk. मीन्स जब रैम के अंदर वो डाटा जब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है, क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो हमें अगर वो डाटा फ्यूचर यूज़ के लिए चाहिए, हमने उसके अंदर कोई एडिट करा है, रीराइट करा है, तो हमें उसको सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो वो डाटा इरेज हो जाएगा जैसे ही कंप्यूटर बंद रहेगा। और सेविंग क्या कहते हैं? सेविंग इज़ द प्रोसेस इन ऑफ कॉपिंग आइटम्स फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। रैम से डाटा को हार्ड डिस्क में दोबारा भेजना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेविंग। नाउ what are the types of RAM? Three common types of RAM chip are dynamic, static and magneto-resistive. Magneto-resistive means which are resistive to magnet. Resistive means opposing. Magneto-resistive RAM. Dynamic RAM or DRAM is inexpensive and most popular. Inexpensive means it is cheaper as compared to other types of RAM. Is inexpensive and most popular type of main memory used in computers. Many variant of DRAM chips exist, most of which are faster than the basic DRAM. Means DRAM के भी फर्दर अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स अवेलेबल है जो कि फास्टर है एज कम्पेयर टू द बेसिक और स्टैंडर्ड DRAM. SDRAM or synchronous DRAM. It is faster and more reliable than basic DRAM. DDR SDRAM, double data rate SDRAM. It is faster than SDRAM and transfer data twice instead of once for each clock cycle. Means एक क्लॉक साइकिल में ये डाटा दो बार, डबल मीन्स दो बार डाटा को ट्रांसफर कर सकता है एज कम्पेयर टू एस डी रैम, क्योंकि वो सिंगल एक बार में ही कर सकता है। एस डी रैम बेसिक से फास्टर होती है, पर डी डी आर एस डी रैम से भी फास्टर होती है। डी डी आर टू, it is the second generation of DDR which is faster in speed. Now means basically all these variants are differentiated on the basis of their speed of transferring data. DDR2 is the second generation, means further upgrade of DDR RAM. DDR3, it is the third generation of DDR which is designed for computers with multi-core processor. It is faster than DDR2. Means DDR3 is basically designed for computers having multi-core, means more than one core. Two or more cores are present in a computer, then that type of computer is called multi-core processor computer. And it is faster than DDR2. DDR4 is the fourth generation of DDR which is even faster than DDR3. And RDRAM means Rambus DRAM. It is much faster than SDRAM, means
it is faster than all the 4 generations of SDRAM. Now let us see static RAM. It is efficient and fast, but is comparatively expensive. SRAM is much used in small amount of cache memory in a computer. Means cache memory means जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी की अमाउंट कम रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर स्टैटिक रैम यूज होती है. Cache memory improves the performance of a computer by storing the data which is computer frequently uses. Means cache is the type of memory that computer stores. Cache is the type of memory which stores the data which computer uses frequently. मीन्स जो कंप्यूटर बार बार जिस टाइप को डाटा को यूज कर रहा है या जिस टाइप के डाटा को वो ट्रांसफर कर रहा है, उस टाइप के डाटा को कैशियर मेमोरी अपने में स्टोर कर लेती है. Magnetoresistive RAM, MRRAM, is a new type of RAM which stores data using magnetic charge instead of electric charge. Means in this type of RAM, magnetic coils or spring in the spring shape of spring shape of material is present, which works on the principle of electromagnetism. Its manufacturers claim that it has greater storage capacity, consumes less power and has faster access time than other RAMs. Means जो इसके मैन्युफैक्चरर्स है वो ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है और लेस पावर कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू अदर रैम्स एंड इज फास्टर टाइम एज कम्पेयर टू अदर. मीन्स ये कम टाइम लेती है और फास्टर एक्सेस है इसकी, इसके अंदर हम डाटा की एक्सेस जल्दी ले सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर रैम्स. MRAM retains its content even after the computer is switched off, which could prevent loss of data for users. Means MRAM is a type of RAM which can do the work of both primary as well as secondary memory. Means it is either it is both volatile as well as non-volatile. Stores data even after the computer is switched off, so that user does not have any loss of data. Next, what is memory module? A memory module is a circuit board. Circuit board means the board which consists of different types of element or electrical element is called a circuit board that holds memory chip. RAM is a type of memory chip that makes up the main memory in a computer system. Means here this is the image of a RAM. Here these small ones are the memory chip and this complete unit is a memory module or the circuit board. This circuit board consists of small memory chip that helps in storing data and perform the task of RAM. These small chips together make a whole RAM. Two types of memory modules are SIMMS and DIMMS, SIMS and DIMMs. A single inline memory module or SIM has pins on opposite sides of circuit board that connects together to form a single set of contracts. With dual line memory module, the pins are opposite sides of a circuit board do not connect and thus form a two set connects. Means in SIMs, these are the pins that connects it through the motherboard. These RAMs are connected to attached to motherboard. As I said earlier, motherboard is a main board which is installed in the CPU where all the electric components are attached. These pins attach themselves from the motherboard. If these are present on the single side, then it is called single line memory chip module, and if these are present on both the side, here and here, both the sides are, if they are present on both the sides, then it is called dual inline. Means these are present in line, that's why it is inline, and dual means available at both sides. Now let's see
What is ROM or read only memory? ROM refer to the memory chip used for storing data that can be read only. Means this type of data can be read only, not rewritable or cannot be changed. The data on ROM chips cannot be modified, hence the name read only memory means this type of data cannot be modified. ROM is a non-volatile means the data which is stored inside the ROM remains inside the disk even after the computer is switched off. Its contents are not loose even the computer is switched off. ROM chip contains data, instructions or information that are recorded permanently. मीन्स रोम के अंदर जो डाटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है वो परमानेंटली रिकॉर्ड रहते हैं. फॉर एग्जांपल रोम कंटेन्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS. What is the full form of BIOS? Basic Input Output System, which is a sequence of instructions the computer follows to load the operating system and other files when you first turn on the computer. Means BIOS is a sequence of instruction जिसके अंदर कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और दूसरी फाइल्स जो कि रिक्वायरमेंट होती है जैसे ही कंप्यूटर पहली बार लोड होता है या फिर बूट होता है. मैनी अदर डिवाइसेस ऑल्सो कंटेन रोम चिप. फॉर एग्जाम्पल रोम चिप्स इन मैनी प्रिंटर्स कंटेन डाटा फॉर फोन्ट्स. मीन्स प्रिंटर्स के अंदर भी रोम चिप होती है जो कि फोन्ट के स्टाइल को स्टोर करती है. Manufacturers of ROM chip often record the data, instructions or information on ROM chips when they manufacture them. Means जो manufacturers है ROM chip के वो भी data, instructions और information को chips के अंदर ही store करते हैं while manufacturing. Now let us see some of the variants of ROM chips. A programmable read-only memory or PROM chip is a blank ROM chip on which you can place items permanently. Programmers use microcode instructions to program a PROM chip. Means these type of chips are blank chip where data can be stored permanently and programmers use microcode means small amount of codes or microcodes so that they can program the instructions into them. Next, erasable PROM means erasable programmable read-only memory is another type of ROM, the content of which are erased by ultraviolet lights and then it can be reprogrammed. Means ultraviolet light is required to erase the content available in EPROM and then programmers can rewrite the program. And electrically erasable programmable read-only memory or EEPROM is another variant of PROM chip which allows a programmer to erase the microcode with an electrical signal and can be reprogrammed. Means here as ultraviolet light is required in EPROM, here electrical signal is required so that the programmer can rewrite the code or microcode. Now, what is cache memory? Cache is the temporary storage area for instructions and data that enhance the CPU speed. Means for enhancing the CPU speed, cache memory is required as they store the files and instructions temporarily inside a computer. Most of the today's computer improve their processing time with cache memory. Cache improves the processing speed of a computer because it stores frequently used instructions and data. Means cache memory के अंदर वो डाटा स्टोर होता है जो कि कंप्यूटर frequently यूज करता है. Cache is built directly in the processor chip. Means कैशे मेमोरी डायरेक्टली प्रोसेसर चिप जो कि प्रोसेसर होता है कोर होता है उसके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आती है. Most modern computers have 3 type of layer of cache memory, level 1, level 2 and level 3. Let us understand them. L1 cache is built directly on the processor chip and is usually small
in capacity. Means L1 type of cache are pre-built और built inside the processor और उनकी storage capacity भी छोटी होती है. L2 cache is slightly slower than L1 cache but are much larger in capacity. Means L2 cache की थोड़ा छोटे साइज की होती है बट कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू L1. Now L3 is cache on the motherboard that is separated from processor chip. Means L3 वो टाइप की कैशियर है जो कि मदरबोर्ड पे डायरेक्टली मदरबोर्ड पे अटैच होती है और ये प्रोसेसर के अंदर नहीं होती. When the processor needs an instruction or data, it first searches cache in order of L1, L2 and L3. Means processor follows the path of L1 to L2, then L2 to L3 in search of a data or instruction. If it do not locate any item in any cache, then it searches the RAM. If the instruction or data is not found in RAM, then it searches it in the storage device such as hard disk. Means here, this diagram, through this diagram you can easily understand what I said earlier. This is a processor. If a file is required by a processor, then वो सबसे पहले L1 को चेक करेगा. L1 में अगर उसको नहीं मिली तो वो L2 के पास जाएगा. अगर L2 में भी नहीं मिली तो वो L3 के पास जाएगा. और तीनों में से किसी भी कैशे मेमोरी में नहीं मिली उसको कोई फाइल या इंस्ट्रक्शन तो वो रैम के पास जाएगा. और अगर रैम में भी वो डाटा नहीं मिला तो वो एंड में हार्ड डिस्क या फिर एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा वो इंस्ट्रक्शन या डाटा के लिए. दिस इज द फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ मेमोरी in a computer. Now, the last topic of this chapter, secondary memory. Secondary memory is used to store data for long time. Means in primary memory data is stored for a small period of time, but in secondary data can be stored for a long period of time. It operates at slower rate than primary memory. This memory is permanent in nature, that is, data is stored not lost even when the computer is switched off. So it is known as non-volatile memory. It is also known as backup memory. The main example of secondary memory is hard disk. Means जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसके जो कि अपना डाटा लूज नहीं करती इवन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. और सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हार्ड डिस्क. क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में हमारा डाटा स्टोर रहता है इवन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. हमारी जितने भी फाइल्स हम सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर जाती है ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें फॉर फ्यूचर यूज़. सो थैंक यू so much for watching, and please do not forget to like, share and subscribe to our channel.